there are so many graphs. देखो सारे के सारे green colors में आ गए. Everything is in green colors because we have chosen the green theme. So, तो mostly used charts are column chart, line chart, pie chart and bar chart. ये सारे भी use होते हैं, but it has different. But normally offices में आपके column charts and bar charts होते हैं and pie charts होते हैं. Line भी कभी-कभी ही use होता है. So, bar charts and column charts are usually same. One is horizontal and another is vertical. So, I'll just choose column chart and OK करते हैं. As I was said, you need a table. So आप देखो, आपको यहाँ पे chart insert हो जाता है and you can get a table and here you can change the data and the chart will change automatically. Okay, let's see one thing. Like you have three groups, right? Group A, Group B and Group C. जैसे मैंने change किया, could you see this? नीचे में यहाँ change हो गया Group A, Group B and Group C. Yes, sir. Right. If you want to add one more group, just add it here. Group D. See, ये ऑटोमेटिकली उससे ले लेगा. देखो यहाँ पे नीचे ग्रुप डी भी आ गया, राइट? Okay, now the category thing. Category thing, okay, I want to count number of boys and girls in each group. चलो, boys and girls कर दिया. ग्रुप ए में मान लो कि हमारे पास 20 boys हैं, ग्रुप ए में 15 boys हैं. Could you see the changes that we are getting in the chart? है ना? 20 है मान लो, and again we have 35 boys. In girls also, like we have okay, 25 girls, 35 girls, 25 girls, again 35 girls, and let's go for 10 girls. Could you see this? नीचे में दिख रहे हो? Change हो गया boys and girls का graph. Yes, sir. ठीक है? Okay, I don't need this category 3 and category 4. So what I will do, either I can delete it. If I delete it, see what will happen. See. ये यहाँ से तो हट गया, बट द स्पेस ये जो है ना ये रिमूव नहीं हुआ, राइट? व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, ये दिख रहा है यहाँ पे छोटा वाला जो बॉक्स है, could you see this? यहाँ पे नीचे में है ना, आपको इसे पकड़ के यू हैव टू ऊपर कर देना पड़ेगा. बात समझ में आया? Yes, sir. Once it is done, you can close this and your chart is ready. Again, if you want to edit it, you can go for यहाँ पे आप edit कर सकते हो, edit data. बात समझ में आया? ठीक है? Yes, sir. ओके, उसको तो एंड ओके. चलो इसमें फिर से जरा डेटा गड़बड़ हो गया. देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय वर्ड, सो इसीलिए मेरा डेटा चेंज हो जा रहा है, एल्स वो चेंज कभी नहीं होता. बी श्योर. आई वांट टू शो समथिंग. सो मैं देख लेता हूँ. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप सी, लेट्स गो टू ग्रुप बी आल्सो. 20, 15, 25, 40, 50, 60, 65, 70. I don't need this too, so I'll just remove this. ऐसे कर देंगे and then we'll remove it. Okay. यहाँ तक clear है, right? Is there any confusion? यहाँ तक? No, sir. No. Okay, good. Now see, अगर आप चार्ट को मोर एडिट और ज्यादा एडिट करना चाहते हैं, if you want to edit or stylize your chart more, then we have some certain options. Like see, I don't need this one, so I'll click on this and press delete. So it will remove. I don't need this line. Select the lines, delete it. I don't need this chart. Select this one, delete it. Okay. This is known as the legend as Group A, Group B, Group C, and Group D. So you can click here. आप देखो यहाँ पे लेजेंड्स मिलेंगे. इफ यू वांट टू पुट इट इन द राइट साइड और लेफ्ट साइड आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, जहां भी आप करना चाहते हो. उसके बाद आप देखो ना, इफ यू वांट टू शो द वैल्यूज आल्सो, क्योंकि यहाँ पे ठीक है वी कैन सी बट स्टिल वी नीड टू शो द वैल्यूज, देन व्हाट वी विल डू, सी क्लिक हियर, गो टू डेटा लेबल्स एंड देयर यू आर. दिख रहा है आपको यहाँ पे वैल्यूज भी आगे ऊपर में, है ना. ना अगर आपको और अलग अलग तरह के चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो. आप अंदर में भी डाल सकते हो, ऊपर में भी डाल सकते हो, नीचे में भी डाल सकते हो. सो ज्यादातर हम लोग आउटसाइड रखते हैं बिकॉज इट इज क्लियरली विजिबल, और आइदर वी पुट इट इन द बेस. सो ये भी कहीं के अच्छा लगता है. सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. Now, data callout is something जो अलग से इस तरह से दे देगा, but we don't use data callout in this bar charts. Always remember that it looks odd a little.
सो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसे सिंपल सा आउटसाइड इन कर लेते हैं। ओके, नाउ इफ यू वांट टू चेंज द फॉन्ट्स आल्सो, आप क्लिक करो यहाँ पे, क्लिक एनीवेयर एंड फिर आप उसे बड़ा कर सकते हो। देखो जिसे भी आप सिलेक्ट कर रहे हो वो दोनों उसका सिलेक्ट बड़ा हो रहा है, दिख रहा है। अगर आपको सारे को करना है आप सारे को सिलेक्ट कर लो, ये भी कर सकते हो, या एक एक करके भी आप कर सकते हो। यू कैन चेंज द फॉन्ट साइज एंड व्हाटएवर यू वांट टू चेंज। समझ में आया? ठीक है। If you want to change the theme of the chart also, you can go to the design and you can change the colors। यहाँ पर देखो कलर्स आपको मिल जाएंगे, बट अभी फिलहाल ये थीम के साथ आ रहा है, इसलिए यू कैन चेंज द थीम। थीम जरा चेंज कर देता हूँ, ऑफिस वाला कर देता हूँ ना। चेंज द ऑल द कलर्स। आप देख रहे हो वी हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर द चार्ट कलर्स, है ना? दिख रहा है? Yes, sir. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? वैसे आप यहाँ से भी ले सकते हैं, बट आई विल प्रेफर टू कीप योर चार्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। लाइक आपको अगर ये पसंद है, चलो यू वांट दिस फॉर्मेट, okay, but you don't need this black color, again you go and go to this format, click here, go to shape fill and click on no fill। See, हट गए ना सारे। click on the things, text, you can change the text colors to black here। See, आप इसमें चेंज कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है आप लोग को? हेलो? हाँ सर। प्लीज हाँ सर ना सर बोलते रहो, बार बार बोल रहा हूँ। सर हाँ जी। सर आई हैव अ डाउट। हाँ जी पूछिए ना। सर वो एक्चुअली एक एक बार का कलर कैसा चेंज हुआ? एक एक बार का, इफ यू वांट टू चेंज द कलर दिस ग्राफ सिलेक्टेड ना, आप उसे सिलेक्ट करो, गो टू द फॉर्मेट एंड यू कैन चेंज द कलर्स व्हाटएवर यू वांट। सी, दिख रहा है? हाँ सर। यू कैन सिलेक्ट, यू कैन डू इट। ठीक है। ओके सर, यस सर। सो चलते हैं दूसरे वाले में, पाई चार्ट्स में चलते हैं। लेट्स डू वन मोर एग्जांपल।